गुड इवनिंग ऑल। आज का सेशन काफ़ी अच्छा रहा इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट्स और इन टर्म्स ऑफ द गेन्स दैट वी हैव मेड सो फार, बट इन टर्म्स ऑफ द मोमेंटम दैट वाज एक्सपेक्टेड उस तरह का मोमेंटम एक्चुअली वहाँ पे इतना देखने नहीं मिला। नो ऑल्दो वी एक्चुअली गेज्ड वेल कि मार्केट थोड़ा सा चॉपी राइड से जाने वाला है एंड दी ब्लास्टिंग ट्रेड्स और द फायरवर्क्स शायद उतना देखने ना मिले। सो वी एक्चुअली मैनेज टू मेक सम स्मॉल अमाउंट ऑफ गेन्स हियर एंड देयर एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे एक अच्छा सा ट्रेड हमें हाथ में लगा वेयर वी एक्चुअली मैनेज टू मेक decent amount of gains for the day. Now before I move on to the setup for tomorrow, let me quickly give you a brief of something. So as you all know that we have introduced Fidelity card. As you all know that we are going to get SEBI approved or rather SEBI registered. We are at the final stage of the registration process, or rather we are about to hear from SEBI on the final note. एक बार जब SEBI से अप्रूवल आ जाएगा then we will be sort of making certain changes to our monthly subscriptions and training cost as well. So far जिस intent से हमने ये channel चला it has been working pretty well. Now this is the time to get the right valuation for the channel, for the services that has been provided, for the efforts that we have been making so far. So just giving you a heads up, once we receive the SEBI approval, from the immediate next month the subscription charges will be increased. The training cost will also be increased, but respecting the members who have been in channel since quite a long time, so that is where this picture comes in place. So agar if you have been in channel for 2 consecutive months, if this is your first month, you still have a chance. You have to renew for the July month as well, and then you will be getting the 2 consecutive months where you get eligible for the Fidelity card. Or if you have been in channel for at least 4 months by now, we have been into live पेड चैनल सिंस मंथ ऑफ अक्टूबर. अगर अक्टूबर से लेके अभी तक बाय एंड ऑफ द जून इफ़ यू हैव बीन इन चैनल फॉर 4 months देन यू कैन क्लेम योर फिडेलिटी कार्ड. जुलाई के बाद एज वी रिसीव द अप्रूवल उसके बाद देर विल बी नो फर्दर फिडेलिटी कार्ड विच विल बी ऑफर्ड टू एनी ऑफ द मेंबर्स और एनी ऑफ द ट्रेडर्स. दिस इज द फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम वेयर दिस कार्ड विल बी इशूड. सो वंस यू रिसीव योर फिडेलिटी कार्ड, व्हाट आर द बेनिफिट्स? द बेनिफिट्स आर, अगर आपके पास ये कार्ड है देन दी मंथली सब्सक्रिप्शन चार्जेस विल ऑलवेज रिमेन सेम फॉर यू, दैट इज़ 499. यू कैन अवेल द ट्रेनिंग एट 5999 एनी टाइम you wanted to. Any other verticals that I'm going to add, like let's say stock positionals or commodities, there are further plans as well in terms of expansion and in terms of extending the AAA Trade Intellect channel or rather the company that we are currently running. So there are quite a few multiples which will be added. So any vertical gets added, and if you are interested in joining that vertical or that channel, you can subscribe at the same rate, which is 499 for each of the channels that you wanted to. Okay, just giving you a heads up, the channel subscription rates are going to spike up by 2x as we receive the approval from SEBI. So do drop me a message to get your virtual Fidelity card. Now let's move on to the setup for Nifty and Bank Nifty for tomorrow. Looking at the pattern formation, इतना कुछ ज़्यादा नहीं है यहाँ पे डिटेल आउट करने के लिए. ओनली वन थिंग दैट इज़ टू बी नोटेड इज़ यहाँ पर एक ब्रेक डाउन हो चुका है एंड वी आर येट ट्रेडिंग बिलो द ब्रेक डाउन लेवल्स. आज थोड़ी बहुत सॉर्ट ऑफ अपवर्ड मोमेंटम या थोड़ी बहुत रिकवरी आई है, बट दैट इज़ टू बी डिस्काउंटेड बिकॉज इट वॉज जस्ट और अदर इट वॉज मेयर एक्सपायरी मूव, नथिंग मच. शॉर्ट कवरिंग होनी थी, शॉर्ट कवरिंग हो चुकी है. सो दिस इज़ वेयर वी आर करेंटली, but yeah, we are yet trading below the breakdown levels, so we will be actually expecting further drag down onto Bank Nifty and Nifty. और rather let's see अगर कल को कुछ मार्केट में रिकवरी आती है, if it manages to trade above 35,150 odd level, then we can actually expect or we can actually watch out if Bank Nifty manages to re-enter into this upward trending channel or not. With respect to levels for tomorrow, for you to trade well, enter long or rather create long positions on Bank Nifty above 35,150 odd level, where you will be testing and will be broken out the OI resistance of 35,000 for the targets of around 35,300 to 350. The targets are quite short for tomorrow. That is the reason being you got the channel resistance out here, which will be tested if you really manage to enter into the upward trending channel or not. So that is going to be your resistance. If at all it manages to break out, एक बहुत ही massive सी रैली कल हमें दिख सकती है.
That is bit odd looking at this current chart. The even thing would be you enter into short below 34,700. You got support around 34,740 के करीब, and below 40 points you can enter into short trade with the PEs of 34,600 or at the max 34,400. The target which is being derived for tomorrow on the short side is of around 34,450 to 34,490. But quite likely since no अभी OI data काफ़ी कम है, ज़्यादा कुछ अभी फॉर्मेशन हुई नहीं है यहाँ पे, quite likely the levels are fragile at the moment. The OI resistance बोलो या OI support बोलो, they are quite fragile. Quite possible एक ट्रेंडिंग मूव कल हमें चार्ट्स पर दिखाई पड़े. वन मोर थिंग ऑन बैंक निफ्टी इफ नोटेड, एक सॉर्ट ऑफ इनवर्स फ्लैग एंड पोल पैटर्न का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है. आई एम जस्ट होपिंग कि ये जो फ्लैग का फॉर्मेशन इट डजंट गेट एक्सटेंडेड टू लॉन्ग विच एलिमिनेट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस इनवर्स फ्लैग एंड पोल पैटर्न आउट हियर. इसे या तो ब्रेकआउट है तो ब्रेकआउट दे दे खुलते से, या फिर ब्रेकडाउन है तो खुलते से ब्रेकडाउन दे देना चाहिए. So the levels have been given, the targets have been given. Now moving on to the setup for Nifty for tomorrow. Similar sort of formation, similar sort of trading on Nifty as well as we have seen on Bank Nifty, directly getting onto the levels to trade, getting directly onto the levels to trade. We will create or we will make long position above 15,840 for the near target of around 15,900 to 920. We will create short positions below 15,750 for the near target of around 15,700 से लेके 15,680. Nifty में भी we see similar sort of inverse flag and pole pattern. So let's see कल को ये breakout होता है या फिर ये breakdown होता है. So that is with respect to the setup for Bank Nifty and Nifty for tomorrow. Nothing much to be discussed out there. OI data भी काफ़ी fragile है, so एक तरफा directional move हमें कल दिख सकता है. If traders really participate towards one direction, that is there. You can join my live channel for live trade, for live explanation, for live logic and for live guidance. Link is being shared in the description box. आप वहाँ पे channel join करके मुझे reach out कर सकते हैं for further process to join the live channel. And please also do subscribe to the YouTube channel for daily setup and further updates. Till the time, thank you, bye bye, see you tomorrow on the ground.